and this is the gallbladder. This green is your gallbladder, and this is the ligamentum teres hepatis. Okay? Ligamentum teres hepatis. So now we should know what are the boundaries of quadrate lobe and what are the boundaries of your quadrate lobe. This will be asked in your exam. आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपको MCQs में भी वेरियस ऑप्शन देके इट कैन बी आस्क्ड. Okay, so now can you see here? This is the right aspect, this is the left, this is right, left. Okay, right, left. So we can see here this is the quadrate lobe. ठीक है, quadrate lobe की क्या बाउंड्री हो जाएगी? On the right side, right, what? Right. This is the left side. यहाँ पे left का हमने left triangular ligament draw किया है. So this will be left line. और this also telling you this RI means right boundary is formed by I means IBC. That is the inferior vena cava. Okay. So right side of this quadrate lobe is formed by the inferior vena cava और groove for the groove जिसमें कि वो है groove for inferior vena cava. So this is the groove for inferior vena cava. On the left side, what we have? We have ligament. L से left, L से ligament. Okay. So on the left side we have ligamentum venosum. ठीक है, ligamentum venosum. So on the left side we have a fissure for ligamentum venosum. On the right side we have inferior vena cava, and inferiorly we have porta hepatis. Inferiorly we have porta hepatis. Okay, and superiorly it is free. Superiorly it is free, and there will be free conduction between right and left lobe. Right and left lobe can be continued here between superior area. ये quadrate lobe के ऊपर जो होता है both can be in continuation. Okay, so this is the boundary of quadrate lobe. So this can be a quadrate lobe. That is the on the right side it has a groove for the IVC, and the left side it has the groove or fissure for the ligamentum venosum. Inferiorly it is a porta hepatis, and superiorly it is free. So there will be a communication between the right and left lobe of the limb. Clear, everyone? Now, any problem till the now? Student, any problem till now? समझ में आ रहा है सबको? Because it is important. You have to understand this. Okay? Now coming to this quadrate lobe. Quadrate lobe, what will be there? One side on the right side and left side. So L से left side में always we have ligament. So we have a fissure for ligamentum teres hepatis. Okay, this side on the left side. On the right side we have a fossa for the gallbladder, and anteriorly what we have? Anteriorly we have this inferior border, and posteriorly we have this porta hepatis. Okay, so I'll write it down. Okay, so what are the boundaries? What are the boundaries of your? This is the boundaries of your quadrate lobe. Boundaries क्या क्या हो जाएंगी? आपको राइट साइड में fossa for gallbladder, fossa for GD and right gallbladder. Left में what? Left में that should be ligament. So fissure for ligamentum teres hepatis. Okay, and anteriorly what we have? Inferior border, sharp inferior border of liver. Okay, and posteriorly P से P and P for P. So posteriorly we have porta hepatis. Okay, so these are the things we should know about this liver. Now coming to the various relation. So relations are two types. One is the peritoneal relation, okay, and one is your visceral relation.
Peritoneal I have covered many things like that ligaments again in this in the liver. I'll explain you the peritoneal reflection. Now coming to here, this now coming here, there will be visceral impression which we will see here. Okay, so left side में which organ will be related, which important organ will be related to liver in the left side. लेफ्ट साइड का सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन क्या हमने पढ़ा था? व्हाट आर द ऑर्गन्स? स्टमक. वेरी गुड. सो दे ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट लोब, राइट लोब इज वेरी बिग. इट फॉर्म्स द 5th 6th पार्ट ऑफ योर लिवर. It includes caudate lobe, quadrate lobe, everything in the right lobe. But left lobe is 1/6 of the part, but it has an important organ in vicinity with that. That will be your gastric impression. So on left side, here will be the esophageal impression. Esophageal impression. Okay. Now on the esophageal. Now from here, then you can draw the stomach. Stomach ka it's a part. This will come, and the pyloric region. This will be your gastric impression. ठीक है. सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जैसे ही आपको लिवर मिलता है एंड यू सी द इंफीरियर पोस्टीरियर सरफेस, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज योर इंफीरियर सरफेस एंड वन इज योर पोस्टीरियर सरफेस एंड वन इज द इंफीरियर सरफेस. जो पीछे का पार्ट है दैट इज अगेन डिवाइडेड. जो अपर पार्ट होता है दैट इज फॉर द योर वर्टिब्रल कॉलम, एंड जो इंफीरियर वाला पार्ट होता है उसमें ज़्यादा आपको विसरल इंप्रेशन होते हैं. आई विल शो यू. सो दिस इज द पाइलोरस. दिस पार्ट इज फॉर द पाइलोरस. ओके. सो दिस इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड. देन ऑन द राइट साइड देयर विल बी इंप्रेशन फॉर व्हाट? देयर विल बी इंप्रेशन फॉर द राइट किडनी. ओके. सो आई शुड erase all this. Then we will go to so there will be, okay, IVC will be there. Okay, so there will be impression on the right side. There will be impression of the right kidney, and right kidney always has a relation with the what? Supra renal gland. Okay, so this is the right kidney, right kidney. Now there will be in between this there will be duodenal impression. So second part of duodenum will be related to this. So this is the duodenal impression, and below with green this will be your colic impression. Okay, for the right side. So this will be your for the lymphatic flexion. Clear? So these are the various impression we will see in the liver, and we will discuss it. So I'll keep this. Then you have to read about the bare areas. Bare area of liver is very, very important, and invariably if you pick up the liver you will be asked about what are the various bare area. Bare means what? The part of the liver which is not covered with peritoneum. Okay, bare means what? Which is not covered with anything. Like we say not covered with clothes, then it is bare. Like this, if any viscera or organ is not covered with peritoneum, then it is known as bare area. Okay, so in liver, what are the parts which is not covered with peritoneum? These are known as the bare area of the liver. So what are the bare area? There are many bare areas of liver. Okay. So first is the triangular area. Triangular area जो था between two coronary ligament. यहाँ जो हमने देखा कि two coronary ligament, they will split like that and they will form a triangular area. This is the coronary ligament, this is the superior layer, this is the inferior layer, and the triangular area which is formed between that will be
here it will be your falciform ligament. Okay, so this triangular area is known as bare area of liver. अभी मैं liver में आपको सब बताऊंगी तो सब clear हो जाएगा. Then other area is here the fissure for inferior vena cava. जहाँ पे inferior vena cava है तो जब पेरिटोनियम उसको कवर करना जाता है तो इट लीव्स दैट स्ट्रक्चर. वो इंफीरियर वेना कवा के कारण उसको सराउंड नहीं कर सकता है वो फिसर को, क्योंकि वहाँ पे इंफीरियर वेना कवा है, इसीलिए वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वहाँ पेरिटोनियम नहीं पहुँच पाता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज बेयर एरिया ऑफ द लिवर. सो सेकेंड इज द फिशर फॉर इंफीरियर वेना कवा. वन इज दिस ट्रायंगुलर एरिया, सेकेंड इज योर fissure for, this is the fissure for inferior vena cava ABC. Then fissure fossa for the gallbladder. These are the various area which is known as bare area of liver. So now I'll show you all the structures in the liver, what are they and their details, and after that I will come to the blood supply, nerve supply, because these are more of the theoretical part. Okay, so we will start with this demonstration of the liver. So in this you can easily understand what are the various things into liver. Okay, so we'll start demonstrating. Is it visible to all? दोनों को दिख रहा है, दोनों लोगों को? Everyone can? No ma'am. No ma'am. अब देखो. Can you see this? अब तो दिखना चाहिए. अब किसको नहीं दिख रहा है? अभी रुक जाओ. हाँ, अब देखो. This is the anterior surface. This is your superior surface. And see this. This is the sharp inferior border. Can you see how sharp it is? कितना sharp है? Can you see it? Yes or no? This is the sharp inferior border. Sharp inferior border. Okay. So this is anterior. Okay. Then posterior. It will be divided. I am rotating it. This will be that posterior part, and this will be the inferior part. So all these have that all the visceral impression. जो पीछे वाला part है. ठीक है. Now coming to the peritoneal reflections and the ligaments, this will be asked. So liver, imagine this is in your abdominal cavity and this is the peritoneum. Imagine this is the peritoneum. Okay. So now this is the abdominal wall. This is the anterior abdominal wall and this is covering in the peritoneum. So this is covering whole of the liver like this, and it is covering whole of the liver like this and this. And some places it will get thickened. So also this is the falciform ligament. Here is the falciform ligament. Can you see this? ये सबको दिख रहा है? No ma'am. ये देखो, ये दिख रहा है? ये तो दिख रहा है अभी. This is the small left lobe and this is the right lobe. Okay? इनके बीच में अब ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? मैंने जो हाथ से पकड़ा है, this will be your falciform ligament. Yes ma'am. This will coming into the fissure of this. इधर left का part है, आप पीछे भी देख सकते हो. This is the left part and this is the right part. Okay? So this ligament, this is covering. यहाँ से cover होके जाएगा and this will go inside that fissure of right and left lobe. दोनों के बीच में चला जाएगा and it will divide it into right and left lobe. Okay? So this is the first ligament which you have to see. This is your falciform ligament. Clear? This is your falciform ligament. So this is the ligament number 1. This is not a true ligament. This is only a peritoneal reflection or support. This is not a true ligament. Can you see this? I know it's difficult to appreciate, but this is anterior surface and this is the falciform ligament. And इधर का part जो है, this is the right part, which the finger I am flickering. This is the right part, and this is the left lobe, and this falciform ligament is dividing it. Here also, this is the right part, this is the left part, and this is the falciform ligament, which is coming in between these two and dividing it. Okay.
So this is the this thing. This is the right and left. Now coming to the left. So superiorly it will go and it will be on the left side. It will become, this is the your left triangular ligament. Can you see the, appreciate the shape? Can you appreciate the shape? This is the left triangular ligament. Can you appreciate on the left side? This is the left triangular ligament. ठीक है, आप लेफ्ट साइड में ऊपर में देखोगे ट्रायंगल शेप लिगामेंट. दिस इज योर लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट. On the right side, it's not very visible. It's only remnants are left. This, can you see this? These are the coronary ligament. ये coronary ligament का part है. It has a one superior layer. Can you appreciate this? This is the one superior layer. ये triangular area सबको दिख रहा है? इधर वाला को नहीं दिख रहा. ये triangular area सबको दिख रहा है? I'll show you later on. ये triangular area दिख रहा है? Can you see this? See, this is the superior border and this is the inferior border. ये superior border है और ये inferior border है. ये जो triangular area आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं है. This is known as bare area of the liver. Okay? This area, this is the superior layer. This is the superior layer and inferior layer. वो लेयर यहाँ अभी दिख नहीं रहा है, विसरा में गायब हो चुका है. सो दिस इज़ द ट्रायंगुलर एरिया. दिस इज़ नोन एज बेयर एरिया. सो व्हेन यू फाइंड द बेयर एरिया, जब आप राइट साइड में देखोगे, राइट साइड में सुपीरियर सरफेस पे, दैट इज़ नोन एज बेयर एरिया. दैट विल बी बेयर एरिया, ट्रायंगुलर एरिया होगा. और यहाँ से फिर ये कंटिन्यू करके दिस विल बी एज अ राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट. यहाँ से दोनों लेयर कोरोनरी की फ्यूज़ कर जाती है and this will form right triangular ligament. यहाँ टूट गया है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, only a part you can see. This is the your right triangular ligament का part. Okay? So left triangular is clear. Falciform is clear. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is falciform is clear. आगे दिख रहा है दो लोग में डिवाइड होता हुआ. इधर देखो दो लोग में डिवाइड होता है, दिख रहा है. So this is falciform, this is left triangular, this is the right triangular. ये bare area हो गया one. Then now coming to this is the superior. Then coming to this area. Okay? आप पीछे आ जाओ. पीछे जब आते हो आप, पीछे आपको दिख रहा है सबको, ठीक है. So this area you can see, this is the, everything is torn out. This is the inferior vena cava. This thing which is coming here, this is the inferior vena cava. You can see the valve. कैसे आप वेन को पहचानते हो? So it has a walls are very thin and collapsible walls are there. So this will be your inferior vena cava. Okay? So ये आपका groove है inferior vena cava का. तो जब इधर से पेरिटोनियम ऐसे आएगी, पेरिटोनियम रिफ्लेक्शन जब आती है, ये ऐसे कवर करती है, ऐसे आके ये ऐसे रोटेट होती है, तो क्या होता है? इस ग्रूव में inferior vena cava है. So it cannot go inside that fissure, and that fissure for inferior vena cava जो है, that will become bare area because it does not have peritoneum. Okay, so this is inferior vena cava. And then you can see here, this is the caudate lobe. This is the caudate lobe. You can see here caudate lobe. ये elevated दिख रहा है caudate. यहाँ पे caudate दिखा? Yes or no? Yes, ma'am. Yeah, this is caudate, and inferiorly there is a quadrate. Inferiorly there will be quadrate. ये ठीक से करते हैं कि एक साथ दोनों. Okay, again this is for the inferior vena cava. This is the superior surface. This is the inferior surface. Superior surface has a relation with the vertebral column के लिए यहाँ पे depression है. Then this is the IVC, inferior vena cava. ये वाला quadrate lobe है और उसके नीचे जो है this is the quadrate lobe. Now coming to the left side, this is the left side. So left side में सबसे बड़ा impression यहाँ पे कौन सा है? This is the gastric impression. On the left side we have gastric impression. ये दिख रहा है left side. ये left lobe है. आपको लेफ्ट लोब को पकड़ना है और उसके पीछे देखना है. दिस होल इज योर गैस्ट्रिक इम्प्रेशन.
देन राइट साइड कैन यू सी किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ दिख रहा है आपको किडनी शेप इम्प्रेशन. सो दिस इज फॉर द किडनी, दिस इज फॉर द राइट किडनी. इसके ऊपर जो ट्रायंगुलर छोटा सा इम्प्रेशन है, दिस इज फॉर द सुप्रारीनल, दिस इज फॉर द सुप्रारीनल. ओके, नाउ दिस इज द गॉल ब्लैडर. कैन यू सी दिस? ये गॉल ब्लैडर फोसा में घुसा हुआ है. सी दिस इज द गॉल ब्लैडर. सी दिस इज द गॉल ब्लैडर. ठीक है, ये इम्प्रेशन में है. ये दिस इज द गॉल ब्लैडर. यू सी हियर, दिस इज द गॉल ब्लैडर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया? रीनल हो गया. यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक हो गया. यहाँ पे सुप्रारीनल हो गया. हियर विल बी इम्प्रेशन ऑफ द डिओडेनम. गॉल ब्लैडर का इधर का जो एरिया है, दैट विल शो द इम्प्रेशन फॉर द डिओडेनम. ओके, सो दिस इज द डिओडेनल इम्प्रेशन. एंड हियर on the margin there will be colic impression. So right flexure के hepatic flexure के लिए that will be the right flexure. Okay, so these are the impression you can see on the liver. ठीक है, समझ में आई आपको? कोई दिक्कत है तो अभी पूछिए. If you have any difficulty please tell. And this is the fissure. ये quadrate lobe के बगल में जो है, this will be the fissure for ligamentum teres hepatis, जो यहाँ से missing है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आर्टरी और वेन है. कैन यू सी दिस? दिस इज द पोर्टा हिपैटिस. ये वाला पार्ट पोर्टा हिपैटिस का है. यहाँ भी आप लोग देखिए, दिस इज द पोर्टा हिपैटिस. यू हैव कटिंग फॉर द आर्टरी, वेन एंड मेनी थिंग्स हियर. ठीक है, सो समझ में आया थोड़ा बहुत? फिर आप पढ़ोगे, देन इट विल बिकम मोर क्लियर. क्लियर? शुड आई रिपीट? लोग सभी. ओके, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब. यहाँ पे आप देखो, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? ये पूरा सरफेस है. ऊपर जो ये एलिवेटेड पार्ट है, दिस इज योर क्वाड्रेट लोब. ठीक है, क्वाड्रेट लोब भी फिर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में. वन इज नोन एज पेपिलरी प्रोसेस एंड वन इज द क्वाड्रेट प्रोसेस. ठीक है, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट प्रोसेस इज डिफरेंट थिंग. Okay, I am not confusing you much. This is the quadrate lobe and inferiorly this is the quadrate lobe. जो gall bladder के बगल में जो नीचे पार्ट है ना, this is your quadrate. This is quadrate and this is quadrate. Clear? ये यहाँ पिंक चौक जो मैंने रखा है, this is your what? quadrate. ठीक है, अब जब मैंने पिंक चौक को नीचे रखा है, this is your quadrate. ठीक है, क्वाड्रेट के जस्ट नीचे में होगा क्वाड्रेट, और उसके बगल में गॉल ब्लैडर होगा, और इधर फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरिस हेपाटिस होगा. क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. और किसी को और कोई प्रॉब्लम? बेयर एरिया हमने समझ लिया. दिस इज द बेयर एरिया. दिस इज द बेयर एरिया ऑन द राइट साइड. राइट साइड में हमें देखना है ऑन द सुपीरियर सरफेस, दिस इज द बेयर एरिया. देन फिशर फॉर इंफीरियर वेना कावा, ये निकल ये दिस फिशर इज बेयर एरिया. द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, जिसमें ये फोसा गॉल ब्लैडर रेस्ट कर रहा है, दिस फोसा इज बेयर एरिया बिकॉज देयर इज नो पेरिटोनियम इनसाइड दैट. ओके, सो दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर. ठीक है, ये समझ में आ गया? शुड आई रिमूव माई ग्लव्स? और कुछ? हाँ, ओके.